Good morning, students. So today let us start another chapter in our science, chapter 15. Topic is reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. So what is adolescence? Now, we can divide our lifetime into three stages of our life. Okay, three stages of our life. First stage is the childhood, then second stage is the younghood, and third stage is the old age. So these are the three stages. But there is another stage that is called adolescence. Adolescent stage in case of children. So what is that adolescent stage? Just see. Here is a from this graph you can easily understand what is the stage of adolescence in our life. So this is a graph of age versus mass. So during childhood this is the fetus का तो लिमिटेड क्या लिमिटेड वेट होता है ना. एज 9 मंथ्स तो उसका जीरो वेट हम मान लिए, उसका कुछ वेट है, यहाँ तक उसका वेट है होगा 3 किलो 4 किलो मैक्सिमम. सो आफ्टर दैट इन्फेंसी और द फीटस टेक्स बार्थ, तो उसका साल यार बढ़ते जाएगा तो उसका मास भी यानी वजन भी बढ़ते जाएगा. चाइल्डहुड में कितना, सपोज चाइल्डहुड हम सब मानेंगे 12-13 साल तक चाइल्डहुड मानेंगे, तो बाय द ईयर 12 तो इसका तो वेट कितना हो जाएगा ना 30-35. बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स इट्स एज बिकम, देखो एज एज बिकम 40 और 35 किलो. बट आफ्टर द एज ऑफ 30 देखो कैसे कैसे हम सबका एब्रप्ट चेंज होता है एडोलेसेंस स्टेज में ना. चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पीरियड इज द पीरियड इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड adulthood. They can neither be considered as child nor they can be considered as adult. Okay, so it is the time gap between childhood and adulthood. So that is it is 10 to 18 years. 18 years अगर हो जाएगा तो हम उसे adult मानेंगे, 10 से कम रहेगा तो child मानेंगे. So from 10 to 18 years देखो हम सबके कैसे abrupt development होता है adolescence period में सब कुछ. देखो यहाँ 13 years में weight कितना है, 13 years में लगभग 40 किलो. बट इन बिटवीन 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स देखो तुम्हारा वेट कितना बढ़ गया है, 40 से लेके तुम्हारा एज 65-70 तक चला गया, वेट 75 किलो तक चल गया. तो देखो ये 5 साल में 13 टू 18 ईयर्स विद इन दिस 5 ईयर्स तो हमारा वेट कितना इंक्रीज हो गया है ना, फ्रॉम 40 टू 70 यानी 30 किलो इंक्रीज. और ये पहले 13 साल में कितना बढ़ा है ना, 13 साल में अप टू 35 गया है. ठीक है ना. तो ये 13 साल में जितना हुआ है ये 5 साल में उतना वेट तुमको ज्यादा हो जाता है. तो ये कमाल है ना, यही जादूगर है, यही दिस इज द मैजिक ऑफ एडोलेसेंस स्टेज इन आवर लाइफ और एडोलेसेंस पीरियड. यानी इट इज द पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, रैपिड मेंटल मैच्योरिटी है ना, रैपिड, और इट इज द स्टेज ऑफ अटेनिंग योर बट sexual maturity. The adolescence period is the period of attaining sexual maturity, and after the adolescence you will become completely, you will feel yourself like a manhood and you will become a complete man or woman. So let us start this chapter. Living organisms reproduce to increase their number and maintain their species. Living organisms, like we know reproduction, what is the purpose of reproduction? It is to maintain the race and their number. Race भी जिंदा रहना चाहिए और संख्या भी बरकरार होना चाहिए. Most living organisms are able to reproduce only after a certain age in their life cycle. और reproduction लेकिन एक तो निश्चित पीरियड होता है रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन एज एक होता है. सो मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज इन देयर लाइफ साइकिल. कुछ एज है ना, आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज वी कैन ओनली अंडरगो रिप्रोडक्शन स्टेज. We can cross over to the reproduction stage. The life cycle of a human beings consists of 3 main stages of development, and those are childhood, adulthood and old age. चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. ठीक है, तो चाइल्डहुड तो चाइल्ड जानते हैं, एडल्ट मतलब वयस्क हो गया, ओल्ड मतलब बुढ़ापा आ गया. तो एडोलेसेंस क्या है, तो देखिए एडोलेसेंस, व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल स्टेज दैट occurs between childhood and adulthood. It is a transitional stage that occurs between, it is the time between the childhood and adulthood. देखो चाइल्डहुड कितना मानेंगे हम सब, 12-13 साल तक चाइल्डहुड मानेंगे, एडल्टहुड आफ्टर 18. तो फ्रॉम 13 to or 12 to 18 years of age is called the age of adolescence or period of adolescence. So
Adolescence is a transitional stage that occurs between childhood and adulthood. This is a stage of physical and mental human development. फिजिकल डेवलपमेंट, तुम्हारा फिजिकल ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ होगा, और मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, तुम्हारा माइंड का मेच्योरिटी बढ़ेगा, है ना. यू विल फील, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग अराउंडिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग विद इन योर सेल्फ, है ना. You will realize what changes are going on within yourself, and you will try to modify yourself, you will try to behave yourself according to these changes. Okay, the term adolescence is derived from a Latin word adolescia, which means to grow to maturity. You are no longer, you are no longer considered as a child, you are now entering into another phase of your life, that is the, you are going towards adulthood, you are going towards adulthood, that is, you are going into maturity. It is the time, it is the time of rapid development of growing towards sexual maturity. It is the time for rapid development of growing towards sexual maturity. तुम्हारा जो सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तुम फुल्ली ग्रो तुम्हारा बॉडी में हो जाएगा. यू विल, दैट इज, यू विल अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी. डिस्कवरिंग मोर अबाउट वन सेल्फ, अपने के बारे में तुमको और जानकारी ज़्यादा मिलते रहेगा. इन रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग पर्सनल वैल्यूज, और पर्सनल वैल्यूज, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसा होना चाहिए, ये सारे तुमको कंट्रोल, है ना, करना तुमको पड़ेगा. यानी यू विल फील ऑल दीज थिंग्स that something is changing, and you should act according to that change situation in your body and mind. Adolescent is neither a child nor an adult. तो एडोलेसेंट जो है वो ना तो चाइल्ड माना जाएगा ना तो एडल्ट माना जाएगा. ठीक है, यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड, यू आर इन द चेंज स्टेज. इट इज ए पीरियड फ्रॉम अबाउट 12 years to 18 years of age in case of human beings. So ये period, this period 12 to 18 years is considered the period of adolescence, or the stage of adolescence, or the age of adolescence. Okay, so during the initial phase of adolescence there are changes in the body. इनिशियल स्टेज में क्या होगा, तुम्हारा बॉडी अब चाइल्ड जैसा नहीं रहेगा. यू विल नाउ, यू विल ग्रो टुवर्ड्स adulthood. You will be attaining all body features. The adolescents become aware of the physical changes, and become aware of the physical changes they are going through. है ना, तुम्हारा बॉडी में क्या क्या फिजिकल बॉडी चेंज हो रहा है तुम सबको पता चल लगने लगेगा. दिस फेज इज between 12 to 15 years of age. This phase between 12 to 15 years of age is the early adolescent period, है ना. So 12 to 15 years is the early adolescent period. These changes mark the onset of puberty. तो तुमको 12 to 15 years में जो तुम्हारा बॉडी चेंज होगा, है ना, वो that will lead you to attain what, manhood. यानी you are entering into the adulthood, and you are attaining sexual maturity. You will be feeling like a manhood, and you will feel like a complete man or woman. So these changes mark the onset of puberty. तो एक तो puberty stage आ जाता है. एडोलेसेंस पीरियड में ही तुम्हारा एक तो स्टेज माना जाएगा जिसको बोलेंगे puberty. Puberty means what, है ना, attaining complete sexual maturity. Attaining complete sexual maturity, यानी if you have attained puberty, you can now reproduce. You are capable of reproduction. You are capable of, तो देखो, तो puberty stage क्या है, after at the 15 years of age. ठीक है, you will be in under puberty stage. You will enter into the puberty stage. Puberty lasts several years during your rapid physical growth, and some psychological changes occur. These lead to sexual maturity. देखो, puberty lasts several years during which rapid physical growth and some psychological changes occur. These lead to sexual maturity. तुम्हारा sexual maturity आ जाएगा. This means the individual becomes capable of reproduction, है ना. One individual is now in a stage of reproducing. The word puberty is derived from the Latin word pubertas, which means age of manhood. Okay, pubertas means if you are attained puberty stage, if you are in the puberty stage, if you have attained puberty, then you are in the stage of manhood. You will feel yourself like a man. और बहुत सारे changes तुमको आएगा, तो changes in puberty सब दिखाई देगा. The average onset of puberty is at around 10 years of age for girls and for 12 years for boys.
तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी दोनों ही जुड़ा हुआ है। एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाएगा 10 इन केस ऑफ गर्ल्स, 12 इन केस ऑफ बॉयज, और सारे रैपिड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Under the adolescence period and a stage of manhood or complete sexual maturity is the stage of puberty. So every person's individual timetable of puberty is influenced primarily by heredity, in addition to environmental factors such as diet and exercise also have quite some influence, ठीक है। तो puberty stage हो गया, तो we are now going to read about the adolescence period, which is the period of neither childhood nor the adulthood, in between. So in between, and we change from child to adult. So what happens during this period, that we are going to read. So changes during puberty, तब क्या हो जाएगा ना, देखो during puberty the following changes occur. Increasing height हो जाएगा, है ना, 15 ईयर्स 5 ईयर्स तक इंक्रीज इन हाइट। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एज एंड हाइट दिया हुआ है। और changes in puberty, change in the size of heart, lungs, change in the body shape, change in the voice, and और increased activity of sweat and sebaceous glands, इतने सारे तुम्हारा बॉडी फीचर्स आएगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एंड यू विल फील लाइक ए कंप्लीट मैन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज आवर नेक्स्ट वीडियो। टुडे लेट अस एंड।